Hello everyone, a warm welcome to all of you in the today's session on AnduTap, in which we are going to cover the top 50 MCQs from the month of January 2023, and this is the part 2 of this particular series, in which we are going to cover the top 50 general awareness MCQs which are relevant for the RBI Grade B, NABARD Grade A, and the SEBI Grade A exam. And guys, let me tell you here that this session is a revision session of what we have covered in the past 1 week in our fast track sessions, and the revision of this particular information that we have covered in the fast track sessions, the most important, the most efficient manner is solving the multiple choice questions. And that is why we are going to cover the top 50 MCQs from the month of January 2023. And guys, this session is going to be a rapid fire session. So that's why you must be prepared and you are really required to comment your answers in the comment section. But before starting the session, here is a very small announcement for all of you that we at EduTap are providing you the comprehensive guidebook for all the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A, and the SEBI Grade A exam. And now, guys, when I talk about these comprehensive guidebooks, these guidebooks are going to provide you the definitive answers to all your queries about the exam, about the preparation of this exam, and as well as about the body as well. For example, when I talk about the Reserve Bank of India, so a question in an aspirant's mind must be popping out that what exactly is the role of the Reserve Bank of India in the Indian economy? So such kind of question will be answered in this particular comprehensive guidebook. Now, when I talk about the exam, what is the eligibility criteria? What are exactly the different exemptions for the age? Now, what exactly is the detailed syllabus? What are the different pattern of this exam? What are the total number of sections in this exam? So everything will be covered in this particular comprehensive guidebook. Apart from that, now the most important question is how to prepare for this exam. So what is exactly the different sources that you must follow in order to prepare for this exam? So all such kind of questions, the definitive answers to these questions will be given to you in this particular guidebook. So what are you waiting for? Kindly download these books from the link given in the description of this particular video. Now, guys, let's move on to the session. And here is the very first question from the today's session, which is here on the screen. The question is that Union Cabinet has approved the continuation of the schemes of the Ministry of Development of Northeastern Region for the balance period of the 15th Finance Commission, that is 2023 to 2025, 2026, with a financial outlay of that. So basically, here in this question, you are required to tell me the amount that has been allocated, that has been approved by the Union Cabinet for the schemes of the Ministry of Development of Northeastern Region. So, guys, let me tell you the right answer. It is option D, that is 12,882.2 crores. Now, guys, a very important point, that is the Finance Commission. First of all, let me tell you that Finance Commission is being set up under the Article 280 of the Indian Constitution. And when I talk about the chairman of the 15th Finance Commission, it was Shri N.K. Singh. And guys, when I talk about the time period for the 15th Finance Commission, the Finance Commission was constituted in November 2017. And when I talk about the time period of the 15th Finance Commission, it is year 2021-2022 to year 2025-2026. So that is what the time period of the 15th Finance Commission is. Now let's move on to the next question. So here you are required to tell me basically about the seating capacity of the India's largest hockey stadium, that is the Birsa Munda International Hockey Stadium. So guys, here basically this is one of the off-track questions, but such kind of questions you can expect in the exam. So when I talk about the right answer, it is option B, that is 20,000. Now guys, when I talk about the Birsa Munda, see, it is a very important part. Last year, Birsa Munda's birth anniversary was being declared as the Janjatiya Gaurav Divas, and this is being celebrated on 15th of November every year. So, guys, that is a very important point that you must remember from the exam point of view. And why also this particular question is very important because India's largest hockey stadium, that is the Birsa Munda International Hockey Stadium, has been launched in the Rourkela district of Odisha. That is the most important part. Now let's move on to the next question. And second question is also a very important question, guys. The question is India has got its first in vitro fertilization mobile unit for animals in which of the following states and union territories. So basically आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेट है जिसके अंदर इंडिया की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट लॉन्च हुई है फॉर द एनिमल्स. द ऑप्शंस आर तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला. तो गाइस, जब भी आप देख सकते हैं एग्जाम के अंदर, आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर कोई चीज पहली बार हो रही है या वर्ल्ड के अंदर कोई चीज पहली बार हो रही है, that becomes really important from the exam point of view, and that is why you must cover that. So here guys, when I talk about the right answer, it is option D, that is गुजरात, जहां पर इसको लॉन्च किया गया है. That is in the Amreli in Gujarat, where the India has got its first in vitro fertilization mobile unit for animals. Now, guys, let's move on to the next question.
So which of the following organizations have released the report Working Time and Work-Life Balance Around the World? So when I talk about this organization, guys, presently this particular organization Director General is Dr. Mr. Gilbert Hongbo, ठीक है जी. तो Gilbert Hongbo is presently the Director General of this organization, and this organization is basically headquartered in the Geneva, Switzerland. Now I think that you can tell me that what is exactly the name of this organization which has come up with this particular report, that is Working Time and Work-Life Balance Around the World. And here, guys, the right answer is option C, that is International Labour Organization. And as per the report, half of the world's workforce works too much or the too little. So, guys, before proceeding to the next question, let me tell you here that this session is a rapid fire session, and you are really required to pace up your answering the questions in the comment section. And apart from that, you are also required to calculate your scores out of 50, because at the end of the session, I will be asking you your scores out of 50 in this particular session. Now, let's move on to the next question. So, अगला question आपकी स्क्रीन पर, SEBI has issued a debt broker license to the Zerodha backed डैश यूनिट. सो आपको मुझे बताना है कि क्या है उस कंपनी का नाम जिसको रिसेंटली सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहां पर इशू किया है डेट ब्रोकर लाइसेंस. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज, व्हिच हैज बीन इशूड द debt broker licensed by the Securities Exchange Board of India. Now let's move on to the next question. So RBI has launched a medium-term strategy framework dash for the year 2023 to 2025. So guys, you are required to basically identify the name of that medium-term strategy framework which has been recently launched by the Reserve Bank of India. And here, guys, it is option B, that is Utkarsh 2.0. And this kind of framework is going to enable the Reserve Bank of India to respond to the socio-economic challenges in both proactive and the reactive manner. And guys, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष 2.0 के जो 6 vision points है ये यहाँ पर आपके सामने mentioned है. You can go through them on your own. Now let's move on to the next question. So अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, and this is basically India's first festival of inclusion, that is Purple Fest, celebrating the diversity. And आपको मुझे बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है. इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को कौन सी स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया है इन दिस ईयर 2023. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गोवा, where the Purple Fest celebrating diversity was being held recently in Goa. Now, the next question is on the Y20, which is the official youth engagement group for the G20, जिसकी presidency India को recently December के अंदर मिली है. And here, guys, you are required to tell me which one of the following places has been selected by the Y20 for its inception meeting from 6 to 8th of February 2023. So you are required to identify the place here. The name of that place is option B, that is Guwahati, Assam. So guys, these are a very, very direct questions, and that's why I'm just telling you the right answer to these questions, and I'm moving forward to the next question. Now the next question. So here, guys, this is a report is here in the news, that is IMD's report statement on the climate of India during 2022. और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि year 2022 was the dash warmest year for India since 1901. See, guys, when I talk about the warmest year, it was year 2016 for India as per the report. But when I talk about the India's, that is year 2022, it was the dash warmest year. So the right answer is option C, that is fifth warmest. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हो कि whenever a report is there in the news, you are required to identify, first of all, the very important thing, that is the releasing body of this particular report, then important findings, what is the framework, what is the rankings, and then the recommendations of the report. और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ findings की, so here the report says that the annual mean land surface area temperature was 0.51 degrees Celsius, and the second important finding, I've already told you that the warmest year for India was 2016. I hope this is clear. Let's move on to the next question. So guys, RBI has announced that the maiden sovereign green bonds for an aggregate amount of dash will be issued in 2 tranches. So recently RBI ने announce किया है that they will be issuing sovereign green bonds basically in 2 tranches. और आपको मुझे बताना है कि what is exactly the aggregate sum of these sovereign green bonds जिसे RBI issue करने वाला है. So guys, when I talk about these kind of bonds, so see, these proceeds will be utilized for funding the public sector projects seeking to reduce the carbon emissions. So carbon emissions को reduce करने के लिए जो projects हैं उनको basically fund किया जाएगा इस particular bond से. And here, guys, the right answer is option D, that is 16,000 crores. Now the next question. As per the recently released first advance estimates of the national income, मैं आपको बता दूं, it is being released by NSO, that is National Statistical Office.
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने ये है दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द ग्रोथ in the real GDP during 2022-2023? What is exactly the percentage? See, guys, when I talk about the 2021-2022, it was 8.7%, and now it has been reduced to 7%. That is option C. That is the right answer to this question. Now, let's move on to the next question. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज प्रेजेंटेड सेवंथ डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। और आपको ये बताना है कि ये जो सेवंथ एडिशन है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का, ये बेसिकली कितनी कैटेगरीज के अंदर इसमें विनर्स को अवार्ड दिए गए हैं। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। एंड हियर द ऑल द दोस कैटेगरीज जिसके अंदर विनर्स को अवार्ड किया गया है, इट इज बीन मेंशन्ड हियर। सो गाइस, द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन ए, दैट इज 7। सो देयर आर 7 categories in which the digital India awards were being awarded to the winners. That is the right answer. Now the next question. RBI has approved the appointment of Surinder Chawla as the new CEO of which of the following banks? See guys, ऐसी जो recent appointments हैं आपको ये याद करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। So when I talk about the bank in which the Surinder Chawla has been appointed as the CEO, the name of that particular bank is option E, that is Paytm Payment Bank. Now the next question. M. Pranesh from Tamil Nadu has become India's dash grandmaster. See guys, basically he has become the grandmaster of India, and now you are required to tell me बेसिकली कौन से नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो बेसिकली द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 79। सी गाइस, अ वेरी इजी क्वेश्चन, अ हलवा क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस में कोई भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। दैट इज आई एम जस्ट टेलिंग यू द राइट आंसर एंड आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द एम प्रनेश हियर, ही हैज बिकम द 28th ग्रैंड मास्टर फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द very big achievement for a Indian state. Now the next question, once again a very easy question guys. The question is World Day of War Orphans, ये कौन सी डेट को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है? See guys, when I talk about the important international days, आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट, किस डेट को उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट, जो कि स्पेसिफिकली चूज की जाती है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, इट इज बेसिकली celebrated for the children who became orphaned during the wars. And guys, when I talk about the right answer, it is option D, that is 6th of January, on which the world basically celebrates the World Day of War Orphans. That is what the right answer is. Now the next question. So Moirang, see guys, Moirang is one of the place which was recently in the news, जहां पर 21 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन को ले डाउन किया इंडियन होम मिनिस्टर ने। और आपको मुझे बताना है कि इसमें से वो कौन सी स्टेट है जहां पर मोइरांग बेसिकली लोकेटेड है। सो गाइस, ऐसी कोई भी प्लेस जहां पर रिसेंटली ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है या फिर उनकी फाउंडेशन ले डाउन की गई है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, इट इज ऑप्शन ई, दैट इज मणिपुर। मणिपुर के अंदर है मोइरांग, दैट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द इंडियन स्टेट व्हिच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद द फुल डिजिटल बैंकिंग सर्विस। तो इंडिया का वो पहला स्टेट जहां पर जो कि फुल डिजिटल बैंकिंग सर्विस बना है, ये आपको मुझे बताना होगा जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। व्हाट इज द राइट आंसर? सी गाइस, ऐसे जो इंडिया के अंदर पहली बार हो रहा है, वर्ल्ड के अंदर पहली बार हो रहा है, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हियर गाइस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज केरला। So Kerala is the right answer, which has become India's first state with a full digital banking service. Now let's move on to the next question. India has surpassed which of the following countries to become the world's third largest auto market? So guys, let me tell you here that this particular data has been released under the Nikkei Asia report. See, Nikkei Asia report ने हमें बताया है लार्जेस्ट ऑटो मार्केट्स के बारे में, जिसमें अगर हम बात करें ऐसी जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो आपको पता होना चाहिए कि टॉप पर कौन था और उसके बाद इंडिया की रैंक क्या थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टॉप पर अगर हम बात करें इट वाज चाइना, सेकंड पोजीशन पर बात करें हम इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स, और थर्ड नंबर पर था बेसिकली जापान अर्लियर। and now India has basically surpassed Japan to become the third largest auto market in the world, and that is why the right answer is option D, that is Japan. Now the next question. Aiming to improve the logistics for operations in the Himalayas, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है अनटीथर्ड मल्टीकॉप्टर पेलोड विच इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और जिसकी अगर हम कैपेबिलिटीज की बात करें गाइस, इट इज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग विद अ 5 किलो पेलोड। और आपको बताना है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इसको डेवलप किया है। अब काफी इजी लाइंस पर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. So recently, the mascots, Smart Touch and theme have been unveiled for the 5th Khelo India Youth Games 2022. See guys, when I talk about the 5th Khelo India Youth Games 2022, they will be hosted by the Indian state of Madhya Pradesh, और MP के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर recently
इन तीनों चीजों को लॉन्च किया है और आपको मुझे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैस्कॉट ऑफ द गेम्स. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द स्मार्ट टॉर्च गाइस, स्मार्ट टॉर्च इज बेसिकली अमरकंटक फॉर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द मैस्कॉट ऑफ these games, so basically mascot is both option A and B, that is Asha and Mowgli. That is the right answer. Now the next question. So Prime Minister of India has inaugurated the 17th Pravasi Bharatiya Divas. See guys, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 9 जनवरी को उन्होंने इनोग्रेट किया है. हम आपको बता दें प्रवासी भारतीय दिवस यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर हर साल 9 जनवरी को. और यहां पर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन. What is the theme of this particular convention for the 17th Pravasi Bharatiya Divas? And here, guys, the right answer is option D. That is diaspora, reliable partners for India's progress and Amrit Kal. Amrit Kal की बात आपको आपको पता ही है. This was the term which was basically used by the Indian Finance Minister during the Union Budget of the last year. Now the next question, guys, and this is here on the screen. The question is आपको मुझे बताना है इसमें से कौन से who among the following has received the first Dr. Patangrao Kadam Memorial Award? तो डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड पहली बार यहाँ पर नवाजा गया है, इसको इंस्टीट्यूट किया गया है रिसेंटली. और आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सनालिटी है जिसको यहाँ पर ये पर्टिकुलर अवार्ड से नवाजा गया है. एंड गाइस दैट नेम इज रियली रियली वेरी वेरी फेमस बिकॉज कोविड-19 के टाइम पे ये नाम बहुत ही चर्चा में था. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अदार पूनावाला. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगले क्वेश्चन इज ऑन द 100-day ग्लोबल सिटी कैंपेन व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. सो गाइस एक 100 डे का ग्लोबल सिटी कैंपेन लॉन्च किया है इंडिया के एक स्टेट के अंदर और आपको बताना है कि स्टेट का नाम क्या है. ऐसे जब भी कोई कैंपेन लॉन्च किया जाता है तो उसका अगर वो कोई स्टेट स्पेसिफिक है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के अंदर उसको लॉन्च किया गया है. सो हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश. और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है. बेसिकली व्हाट इज द मोटो बिहाइंड दैट, इट इज टू मेक अर्बन बॉडीज ऑन पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. जो हमारी अर्बन बॉडीज हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल तक लेकर आना है. दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट. नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंड द क्वेश्चन इज इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट डैश पावर्ड ट्रेन्स ऑन हेरिटेज लाइंस बाय दिसंबर 2023. तो दिसंबर 2023 तक इंडियन रेलवेज इंडिया का पहला डैश पावर्ड ट्रेन हेरिटेज लाइन के ऊपर इंट्रोड्यूस करने वाला है. एंड व्हाट इज एग्जैक्टली दैट सोर्स ऑफ पावर, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी for these particular trains. And absolutely right guys, it is option C, that is hydrogen. तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हेरिटेज लाइंस पर लॉन्च होने वाली हैं बाय दिसंबर 2023. तो ये पीरियड और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ये आपको सोर्स ऑफ पावर आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन गाइस अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज ऑन द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल. ये यहाँ पर रिसेंटली कहां पर स्टार्ट किया गया है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस is basically located in the Indian state of Gujarat. That is option C, Ahmedabad. Now the next question. India's first 3x platform wind turbine generator in Karnataka has been installed. पर उसको कौन सी कंपनी ने इंस्टॉल किया है ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. सी गाइस ये क्वेश्चन आपके 3 डायमेंशंस के ऊपर पूछा जा सकता है. दैट इज सबसे पहले की विंड टर्बाइन जनरेटर है इंडिया का पहला 3 टाइम्स प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर है. कहां पर लॉन्च हुआ है, कर्नाटका के अंदर इंस्टॉल किया गया है. कौन सी कंपनी ने इंस्टॉल किया है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रीन्यू पावर, जिसने की इसको इंस्टॉल किया है कर्नाटका के अंदर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन है गाइस ऑन द नेशनल साइंस डे 2023. तो नेशनल साइंस डे 2023 गाइस आपको पता होना चाहिए इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 28th of February to commemorate the day on which the Dr. C.V. Raman has announced the discovery of the Raman effect, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इन ईयर 1930. और यहां पर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या चूज की गई है. एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग. दैट इज व्हाट द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किया है कितना अमाउंट टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर अ 5-year पीरियड. तो 5-year पीरियड के लिए कुछ अमाउंट एलोकेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने सेशंस के अंदर. और आपको मुझे बताना होगा कि जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम
के लिए अमाउंट है जो एलोकेट किया है 5 ईयर पीरियड के लिए, वो क्या है? एब्सोल्युटली इट इज ऑप्शन ए, दैट इज 1037.9 करोड़. दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द MOU, एंड व्हेनेवर एन MOU कम आई ऑलवेज टेल यू दैट व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द डायमेंशन जो आपको याद करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट डायमेंशन इज द पार्टी जो कि MOU के अंदर इन्वॉल्व है, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द एम ऑफ दैट पर्टिकुलर MOU. ठीक है, तो अगर हम बात करें पार्टी की, तो वन ऑफ द पार्टीज एक्सिस बैंक, सेकंड पार्टी के बारे में आपको मुझे बताना होगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर. और आपको अगर हम एम की बात करें, तो एम ऑफ दिस पर्टिकुलर MOU इज टू सेट अप सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. और यहां पर गाइस अगर हम बात करते हैं द नेम ऑफ द सेकंड पार्टी जिसके साथ ये MOU साइन किया है एक्सिस बैंक ने, दैट इज ISC बेंगलुरु. दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. And here guys, you are required to tell me the name of the company which is tied up with Glue Track to boost customer experience. काफी easy question है, काफी direct question है. The right answer is option D, that is Kotak General Insurance, जिसने की ये MOU साइन किया गया है. Now the next question. So Garuda Aerospace has signed an MOU with which of the following companies to boost agriculture? तो agriculture को boost करने के लिए Garuda Aerospace ने इसमें से कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है to boost the agriculture? And here guys, the right answer is ऑप्शन बी, दैट इज रैलिस इंडिया. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको टैकल करना है. और ये कैसे टैकल करेंगे आप? बाय रिवाइजिंग द थिंग्स दैट यू हैव कवर्ड इन द पास्ट 1 वीक, और इनको कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहिए और उसके बाद ही आप इनको रिटेन कर पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, एंड दिस इज बेसिकली फ्रॉम वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, एंड दिस टाइम इट इज बेसिकली अबाउट द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द RBI. तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने यहां पर इनमें से एक पर्सन को रीअपॉइंट किया है एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और आपको मुझे बताना है कि क्या है उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम. इज इट MK जैन, एम राजेश्वर राव, BP गानुंगो, माइकल देवव्रत पत्रा, और नन ऑफ द अबव? So guys, here the right answer is option D, that is Michael Devratra Patra. That is the right answer. Now the next question. So guys, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोफेसर रहमान राही, the poet and dash first Jananpith awardee has passed away. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ऑबिचुअरीज, और आपको मुझे बताना है कि वो स्टेट जहां से ये प्रोफेसर रहमान राही बिलोंग करते हैं. और यहाँ पर सी एग्जाम में उनका प्रोफेशन भी पूछा जा सकता है, दैट ही वाज अ पोएट एंड ही वाज द फर्स्ट Jananpith awardee from that particular part. And absolutely right guys, it is option D, that is he was basically from Kashmir. Absolutely right. Now the next question. तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि कौन सी वो स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है व्हीकल लोकेशन कंट्रोल सेंटर एंड ऐप. सी गाइस, अगर हम बात करते हैं इस सेंटर और ऐप की, ये सेंटर और ऐप हेल्प करेगा पुलिस को सो दैट दे कैन ट्रैक द व्हीकल मूवमेंट्स एंड दे कैन आल्सो कीप अ चेक ऑन द crimes which happen with the women on inside the moving cars. And guys, when I talk about the name of the state which has come up with such kind of center and app, this is basically option A, that is West Bengal. तो West Bengal का ये इनिशिएटिव है, आपको पता होना चाहिए from the exam point of view. Let's move on to the next question. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द ब्रांड एम्बेसडर. और आपको मुझे बताना है कि हर्बल लाइफ को, यहाँ पर हर्बल लाइफ कंपनी ने इसमें से कौन से क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है. सी गाइस, लेट मी टेल यू हियर दैट इन 2019 देयर वाज अ क्वेश्चन कि मास्टर कार्ड ने उस टाइम पे MS धोनी जी को यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया था, और वहां पर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट रिमेंबर सच काइंड ऑफ थिंग्स. सिमिलरली लास्ट ईयर दीपिका पादुकोण को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था लुई विटॉन का, एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, हर्बल लाइफ ने चूज किया है स्मृति मंधाना जी को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. And I hope that this is clear to all of you guys. Let's move on to the next question. So India has signed an agreement during the 70th प्रवासी भारतीय दिवस. वो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 9th of January को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम हम पढ़ चुके हैं. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर द कॉपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स. उनके डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ये एक कॉपरेशन साइन हुआ है, और आपको मुझे बताना है कि क्या है इस पर्टिकुलर कंट्री का नाम. लेट मी टेल यू, गिव यू हिंट दैट द करेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री इज Panamanian Balboa. And absolutely right guys, now I think life is easy for you to answer this question in the comment section. तो जल्दी बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 36. Absolutely right, it is option B, that is Panama. Now the next question. So guys, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, a very easy question and a हलवा question for all of you, that a World Hindi Day. वर्ल्ड हिंदी डे इसमें से कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? वेरी डायरेक्ट हियर, दैट इज 10th of January, जिसके अंदर हम वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट करते हैं. नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is here on the screen. So Defense Acquisition Council ने अप्रूव किया है प्रपोजल वर्थ 4276 करोड़, और इसके अंतर्गत गाइस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो DAC ने अप्रूव किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर
dash number of capital acquisition proposals, and you are required to tell me that what is exactly that number, and that is basically 3. So DAC has approved acceptance of necessity for 3 capital acquisition proposals. ऐसे questions of the track questions exam में आ सकते हैं, and you must be prepared for such kind of questions from the exam point of view. Now the next question. अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 से, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, एंड द क्वेश्चन इज कि इंडिया का रैंक इसके अंदर क्या है। अगर हम बात करते हैं वो कंट्री जिसने इसमें टॉप किया है, दैट वाज बेसिकली एज ऑलवेज जापान। तो जापान ने इसको टॉप किया है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट इज एग्जैक्टली इंडियाज रैंक, एंड हियर गाइस इट इज 85th। तो ऐसे कभी भी कोई इंडेक्स लॉन्च होता है तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है और साथ साथ टॉप पर कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। So when I talk about the Japan was on the first position, and on the second position it was Singapore and South Korea, which were on the second spot together. Okay, so this is basically being released by the London-based global citizenship and residence advisory firm, that is Henley and Partners, जो कि इसको launch करती है। Now the next question. So RBI has shortlisted 7 global consultancy firms. ठीक है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उसकी डिमांड क्या है। द क्वेश्चन इज आरबीआई ने शॉर्टलिस्ट किया है 7 ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स को टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टू इंप्रूव द रेगुलेटरी सुपरविजन, और आपको मुझे बताना है कि इसमें से वो कौन सी कंसल्टेंसी फर्म है जिसको आरबीआई ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। सी, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर कि वो कौन सी कंसल्टेंसी फर्म्स है जिसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर आपको वो पता है तभी यू कैन आंसर मी दैट व्हाट इज एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बेन एंड कंपनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अलाउ किया है द एक्सचेंज टू इंट्रोड्यूस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स और इंडिसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। अब यहां पर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ये जो सिक्योरिटीज होंगी उनकी रेटिंग कितनी और कितने से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज व्हाट बेसिकली द क्वेश्चन इज डिमांडिंग टू आंसर यू। सो गाइस क्विकली टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 41। Here some of the ratings are being mentioned here, and you're required to tell me the right answer, and absolutely right, it is option C, that is AA positive and above. That is what the rating should be in order to which SEBI has allowed the exchange to introduce derivative contract on the indices of corporate debt securities. Now the next question, guys, a question from a very important report, that is the Global Economic Prospective Report. And guys, let me tell you here that ऐसा इस particular report पर question in the past आ चुका है RBI के एग्जाम के अंदर, and let me tell you here that this particular report is really very important from the exam point of view। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था OECD की रिपोर्ट के ऊपर इन द 2021 आरबीआई मेंस एग्जाम। तो सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन था गाइस। सो दैट्स व्हाई such kind of questions, such kind of reports are really very important, and let me tell you a brief hint here that this particular when I talk about this particular organization, it is headquartered in Washington DC, USA, and the second important thing is अगर हम उनके president की बात करें, it is Mr. David Malpass। ठीक है, now I think the life is easier for you to answer this particular question, and absolutely right, the right answer is option D, that is World Bank। और guys यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो कि as per the report the Indian economy will grow at a robust 6.6% in fiscal year 24। that is what the right answer to this particular question। let's move on to the next question। अगले क्वेश्चन is once again on the MOU, और यहाँ पर हम बता दें आपको के सामने क्वेश्चन है once again the parties के ऊपर क्वेश्चन है that इन स्पेस ने MOU साइन किया, इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ for the geographic information system application। तो geographic information system applications is basically the aim, और आपको बताना है कि इन स्पेस ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये MOU साइन किया है, that is basically option D, that is Nascent Info Technologies, that is the right answer। Now the next question, so here you are required to tell me the name of the movie which has won the 88th Golden Globe Award in the category Best Motion Picture Non-English Language। So guys, I really believe that RRR was really a very good movie, but this is not the right answer। the right answer is option B, that is Argentina 1985। Now the next question, so Clayfin Technologies and Dash have been awarded the Best Digital Channel Platform Implementation, Best Project Implementation at IBSI Global FinTech Innovation Awards 2022, and you are required to tell me that what is the name of that second entity जिसको ये particular award से नवाजा गया है। And see guys, जब भी ऐसे किसी बैंक को किसी award के साथ सम्मानित किया जाता है, such kind of questions becomes really very important from the exam point of view, and such kind of questions are being asked in the exam। Oh, let me tell you the right answer to this question, it is option A, that is Bandhan Bank। Now the next question, Indian American AC Charania has been appointed as the Dash new
टेक्नोलॉजिस्ट। सी गाइस, अगर यहाँ पर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की बात हो रही है, ऑल्दो दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नॉट रेलिवेंट if that particular person has been appointed as a chief technologist in the in one of the companies, for example Meta, Google. But guys, when that particular person has been appointed as the chief technologist of the NASA, then this becomes really important from the exam point of view. And here guys, the right answer is also NASA only. Now the next question. So India has carried out the successful test launch of Prithvi 2. So Prithvi 2 missile is in the news. और guys, मैं आपको बता दूं कि ऐसी जो मिसाइल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ब्रह्मोस के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है आरबीआई के अंदर। दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन नॉट फॉरगेट टू रिटेन। ओके, so India has carried out successful test launch of Prithvi 2. So the missile, which is powered by light propulsion twin engines, has a range of around dash. So basically the question is about the range. तो क्या रेंज है उसकी, ये आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स के अंदर। एंड एब्सोल्युटली राइट गाइस, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज 350 किलोमीटर। दैट इज द रेंज ऑफ Prithvi 2 missile. That is the right answer. Now the next question. So here you are required to tell me that which of the following has become the first national sports federation to enter metaverse. See guys, ये पहला national sports federation बना है. That is why it is really very important to be covered. And it has entered the metaverse, which is launched by the Meta company. और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं right answer की, it is option E, that is Hockey India, जो कि recently पहला national sports federation बना है to enter the metaverse. Now guys, the next question. And here you are required to tell me the name of the country जिसके last king और 1960 के ग्लोबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके कॉन्स्टेंटाइन टू, जो कि रिसेंटली पास अवे हुए हैं। और आपको मुझे बताना है कि क्या है उस कंट्री का नाम। सो लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट दैट द capital city of that particular country is Athens. And now I think that it is really very easy to answer this question. Absolutely, it is option D, that is Greece is the right answer. Now guys, this is the last question of our today's session, and all of you are really requested to tell me the right answer in the comment section, that what is the answer to this question. This question you are basically required to identify a पर्सनालिटी जिसने अपना मेमोयर रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्पेयर। तो स्पेयर जो नाम का मेमोयर है जिसको लॉन्च किया गया है, वो इसमें से कौन सी पर्सनालिटी ने लॉन्च किया है? Absolutely right, guys. It is option A, that is Prince Harry. So, guys, that was all from the today's session. I really believe that this session was really useful to all of you. And now it's your turn to tell me that what exactly your scores in the comment section. तो guys, मुझे क्विकली बताइए आपके स्कोर्स क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज these scores are really very important to analyze that what your strong areas are and what are your weak areas, और आप अपने weak areas को कैसे strong areas में convert कर सकते हैं. That is a very very important point that you must identify with the help of your scores, with the help of your performance in this particular session. So guys, if you are still new to your YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to get the access to the PDF of these sessions. और इसको एक्सेस करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक गिवन है in the description of this particular video. So guys, now that's the end of our session, and if you have any queries, you can just share your queries at hello@edutab.co.in, and you can also call us at 8146207241. And guys, you can also mention your queries in the comment section, and if you have liked this particular session, do not forget to share it with your fellow aspirant friends. So guys, I will be meeting you in the upcoming session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.